because I have completed the environment syllabus. So I will be giving 1.5 hours to international relations and only 1 hour to environment, because they said it's your class only, so you manage whichever way you want to do. पूरा slot आपका है 3 घंटे का, so अगर आप जैसे भी manage करना चाहे. तो मैंने क्या सोचा कि 1.5 घंटा इंटरनेशनल रिलेशन अब सही रहेगा, क्योंकि अब एनवायरमेंट वी हैव कंप्लीटेड. हाँ हाँ बिल्कुल, वो जो आपका बीच में 10 मिनट्स होता है ना, वो आपको मिलेगा. मतलब फिर से ही हम इंटरनेशनल स्टार्ट करेंगे 10 मिनट्स के बाद, नॉट एनवायरमेंट, फॉर हाफ एन आवर. हाँ, आई टेल हिम ओनली इफ इट्स अलाउड. नहीं, इफ इट्स अलाउड जस्ट आई टेल हिम, बट इफ इट्स यू टेक माइंड, दैट्स ऑल आई कैन से. ठीक है, ओके ओके, चलो ठीक है, साथ साथ. थैंक्स, गुड टू हैव योर कंपनी. ठीक है, so where are the students? अभी break पे गए हैं क्या? At what time your first class got started? 8:05 पे started. अच्छा, ठीक. All right. So the first thing is that one needs to know about India, Japan. What we have written in the previous class? क्या लिखा हमने previous class पे? Expanding the Indo-Pacific cooperation में आपने दिखाया Act East policy. Okay. So just tell me one thing. I told you the strategic location of India, Japan. What happened to you? अच्छा, अब ठीक हो आप? क्या हुआ था? फ्लू जो चल रहा है वो सब. अच्छा, अब ठीक हो ना? ठीक है. जो भी आपने कवर नहीं करा है, आप एक बार कवर कर लेना. ठीक है. Although from today's point, today's class, you will be able to understand. Good morning. You will be able to understand. ठीक है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. क्यों चल नहीं रहा? अच्छा, ओके. इट्स लुकिंग लाइक दैट इट्स जून का गर्मी इन अक्टूबर. ठीक है, क्यों हो रहा है फिनोमेना ये? बाय द वे, ज्योग्राफी में बताना जरा, ये क्या चल रहा है? हाँ, अरे लीना के पीछे पड़ रहे हो. व्हाट इज दिस? क्यों इतनी गर्मी हो रही है? क्या चल रहा है? हाँ हाँ हाँ, रीडिंग. हाँ, तो क्या बोलते हैं इसको? नाम और क्या नेम? अक्टूबर हीट. वेरी गुड, अक्टूबर हीट. इट इज अक्टूबर हीट. ठीक है, हमें वो होता है ना बहुत ज्यादा कि व्हाई अक्टूबर इज सो वार्म. दिस इज व्हाई. ठीक है, एकदम से ठंड आएगी अब क्विकली. ठीक है, सो व्हाट वी वर डिस्कसिंग इन जापान एंड दिस थिंग, बताइए. जापान एंड इंडिया में व्हाट वी ऑल डिस्कस्ड. What we have written? Okay. बुद्धिज्म के टाइम से. वेरी गुड. नेक्स्ट. बिल्कुल. नेशनल लीडर्स के बारे में वी टॉक्ड अबाउट दैट हाउ नेशनल लीडर्स आल्सो स्वामी विवेकानंद एंड सुभाष चंद्र. yes 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 expanding the. very good. Indo-Pacific. why? because strategically it's a very important area. ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए that strategically this area is very very important. that means what? I told you this thing also. strategically का मतलब that this area Indo-Pacific now has become important because China is expanding, and since China is expanding, therefore we need all of these countries, Japan, India, for controlling them. What we call it as counterbalancing act. Counter means to go against them, counter करना और balance करना उनको वहां पे. तो कोई ना कोई आपको चाहिए who can balance all of them. ठीक है. Up with all this, it's a very important thing that I have to tell you that Japan is not having its own sovereignty in terms of the defense. For example, how many of you know that US naval bases are standing here for its security, right? They don't have their defense. Unki constitution, which is Article 9 of the Japan, which says that
that we are going to have a defense force, not an armed force, right? That means that Japan's sovereignty is not just restricted to them. Matlab they do not have the they cannot take autonomy over that. खुद के decisions नहीं ले सकते. Although many presidents, prime ministers have been there who have tried to take their own policy. For example, policy which should not be influenced by US. अभी क्या है? Because what happened recently, the Prime Minister of Japan has resigned. How many of you know this? Recently he resigned. Why? Because he said, I'm not going to succumb to this notion that because of the tariffs, I have to give 500 billion dollar. I have to invest. So what they were saying, invest in USA, right? And then he said that we are not going to do that because we already know हमारा जो economy वो shrink कर रहा है because of the inverted pyramid. किसका? population हमारी इतनी कम है, shrink हो रही है, हमारी economy is not that great, and you're talking about investing 500 billion dollar. Then he resigned because he knew this is not going to be the case. अगर इन्वेस्ट करना भी होता है, ऐसा नहीं है जापान इन्वेस्ट नहीं करता है, दे डू इन्वेस्ट. इंडिया में दे डू इन्वेस्ट. देयर इज अ वेरी prominent this thing, official development council which has invested so much, metros etc. इतना ज्यादा उन लोगों ने इन्वेस्ट किया. द पॉइंट इज, लेकिन इन्वेस्ट करने का आउटपुट भी तो उनको मिलना चाहिए, राइट? तो वो तो उनके पास होना चाहिए. अब यहाँ पे क्या है, अगर जापान ने बोल दिया कि नहीं हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब प्राइम मिनिस्टर ने जब रिजाइन किया, ही सेड कि हम वी कैन डू दैट, बट नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर सेड कि ठीक है हम देखते हैं, वी विल ट्राई टू डू. बट आप ये समझिए ना कि व्हाई दे आर सो अंडर द प्रेशर, बिकॉज उनका जो डिफेंस फोर्स है, जो उनका आर्मी है, वो पूरा का पूरा किसके बेसिस पे है? यूएसए के बेसिस पे. और जब यूएसए के बेसिस पे है तो उनका खुद का एक डिसीजन नहीं है. आज इंडिया ने एकदम से बोला, जैसे ही डिसीजन आया टैरिफ्स को लेके, इंडिया सेड वी आर गोइंग टू हैव आवर ओन फॉरेन पॉलिसी व्हिच हैज टू बी इंडिपेंडेंट. व्हेन आई से द वर्ड इंडिपेंडेंट, दैट मींस आई विल थिंक अबाउट माई सेल्फ विदाउट गेटिंग सकम्ड टू एनी प्रेशर. मैं किसी के प्रेशर में नहीं आऊंगा, बिकॉज इन्फ्लुएंस ही नहीं कर पाओगे आप मुझे. किस बेसिस पे आप मुझे थ्रेटन करोगे? अगर आप मुझे एक्सपोर्ट्स के बेसिस पे थ्रेटन करोगे, आई विल डाइवर्सिफाई द मार्केट, आई विल सर्च फॉर डिफरेंट मार्केट्स, ठीक है. सो बट जापान के साथ ऐसा केस नहीं है. जापान के क्योंकि नेवल बेसिस वहां पर है, देन दे हैव टू लिसन टू देम. हाँ, उनका एक्चुअली पोस्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका ने ही लिखा था, और जब अमेरिका ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था तो उसमें they mention in article 9, कभी आपको टाइम मिले तो पढ़ना इसके बारे में, that they are having a defense forces, not the armed forces, and they everything their army etc has been according to them. इतने ज्यादा तेज हैं यूएसए that they even NATO is like that only. What do you think this यूरोपियन कंट्रीज से? जब यूरोप के बारे में और रशिया के बारे में पढ़ेंगे, देन यू विल हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट नेटो आल्सो, दैट वहां पे भी उनके नेवल बेसिस है, नेटो के बेसिस पे, नेटो के थ्रू, ठीक है. क्योंकि नेटो का वो दे वांट दैट एवरी नेटो के व्हाट यू कॉल इट दिस गाइज में दे हैव देयर बेसिस इन यूरोपियन कंट्रीज के पास आल्सो, ठीक है. तो ये चीज आपको देखना है कि किस तरह से अमेरिका हैज ट्राई टू क्रिएट. अब जापान का जब यहाँ पे बेसिस है, यूएस का बेसिस है, दैट मीन्स यहाँ पे वो इजीली अपने फायदे के लिए, फॉर देयर ओन इंटरेस्ट, फॉर देयर ओन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, इंटरनेशनल रिलेशन में आप बोलोगे फॉर देयर ओन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, दे कैन कंटेन, द वर्ड व्हिच यू यूज इज कंटेन, CONTAIN, कंटेन चाइनीज एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, ठीक है. चाइना का क्या पॉलिसी है 2009 के बाद, 8 के बाद? वी विल एक्सपैंड, राइट? वी वांट टू हैव कैप्चर मोर एंड मोर एरिया फॉर आवर ओन बेनिफिट, ठीक है. अब ये चीज है, तो ये आपका प्रेजेंट की सिचुएशन में मैंने आपको समझाया है, ठीक है, कि क्या अभी जो पॉलिसी चल रही है, जो टैरिफ्स हैं, तो उस पर जापान का क्या रिएक्शन है, हाउ पीपल आर रिएक्टिंग, ठीक है, व्हाई दे कांट से नो इमीडिएटली, राइट? फंड्स का तो ऐसा कोई कमी नहीं है, ऐसा नहीं उनके पास डिफेंस का फोर्सेस पे दे डोंट पुट लॉट ऑफ बजट, बट स्टिल अंडर द इन्फ्लुएंस, ठीक है. ओके, हमने लास्ट कहाँ लिखा था? प्लीज कैन यू टेल मी?
हाँ, मेक इन इंडिया, ठीक है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी, अच्छा ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में बताना, व्हाट इज दिस एक्ट ईस्ट पॉलिसी? ईस्ट की तरफ क्या है ईस्ट में? नेबर्स, कौन कौन से नेबर्स हैं आपके ईस्ट में? हाँ, मलेशिया, बिल्कुल, हाँ, राइट, थाईलैंड, और हम्म हम्म लाओस, कंबोडिया एंड, और क्या क्या है? Right. So Act's policy focuses on integrating Northeast Seven system with the mainland and making it conduit for trade and investment in Southeast Asia. Simple सी बात ये है that they want to make a mechanism where they can have a very nice seamless trade with the Southeast Asian country and East Asian countries. What is that? यहाँ पे आपका साउथ ईस्ट एशियन कंट्री सिंगापुर, राइट, कंबोडिया, लाओस, मलेशिया, वियतनाम, ब्रुनई, then you have Thailand, you have Indonesia, all of them, and Japan, etc. They want to have a good strategic relations with all of them. ठीक है? So much so that you must be knowing that maximum FDI has been done by Singapore in India, right? उसका एक और मैकेनिज्म है, क्यों होता है सिंगापुर से, कभी और डिस्कस करेंगे कि क्यों इन छोटी कंट्रीज से ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है हमारे पास। उसमें इकोनॉमी का भी टॉपिक आता है, विच यू कॉल इट एज डबल टैक्सेशन, राउंड ट्रिपिंग, राइट, राउंड ट्रिपिंग ऑफशोर, हाँ, जो राउंड ट्रिपिंग होता है वो क्यों छोटी छोटी कंट्री से आता है, लाइक दिस, वी विल हैव अ डिस्कशन अबाउट दैट। लेकिन सबसे पहले कि एक्टिव पॉलिसी क्या है? एक्टिव पॉलिसी है कि यू हैव टू लुक टुवर्ड्स योर ईस्ट बिकॉज दे आर ऑल्सो स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहली बात वाई इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये आपके नेबर में है, राइट। एनीथिंग देखिए, जब भी इंपॉर्टेंट है, आप कहते हैं ना कि आपको अपने नेबर्स को अच्छे से रखना है, ऑल्सो अगर नेबर्स अच्छे नहीं है तो फिर आपको उसके अगेंस्ट सर्वेलेंस भी लगाना है। हाँ, अब हो गया है, बांग्लादेश वाज फाइन, बट अब वो भी टॉपल हो गया, गवर्नमेंट टॉपल हो गई है। क्यों हो रही है गवर्नमेंट टॉपल? हाँ, मुझे भी लग रहा था, क्यों हो रही है गवर्नमेंट टॉपल? बांग्लादेश एक्सेट्रा क्यों हो रही है, म्यांमार, हाँ, क्यों हो रहे हैं सिविल वॉर्स? खुद में हो रहे हैं, क्यों ऐसा बार बार क्यों हुआ? पहले बांग्लादेश, पहले म्यांमार, देन बांग्लादेश, देन नेपाल, व्हाई ऑल ऑफ सडन श्रीलंका? हाँ, टेक्निकली यूएस पीछे है, बट व्हाई, क्यों? बट व्हाट इज देयर इंटरेस्ट इन दैट? हाँ, exactly, government is not favoring. So there was a very nice podcast also on this international, yes. Hmm. Hmm. Correct. Hmm. Correct. Correct. Hmm. Correct. They make the knockoffs of that. So basically, what is, I was watching a very interesting this thing, discussion. उसमें उन्होंने बोला कि why anybody would want to topple the government, because obviously they are not favoring them. If they are not favoring them, then fragment them, because US is like that only. They are like that only. If they are not favoring you, then they will definitely, if you'll topple them, then the other party will favor you, maybe the one whom you are supporting, right? Any which way they have only one agenda, that they will invest. Same goes with China. China के साथ भी ये है, because once they will get, Sri Lanka got into trap, तो तभी तो उनको, they could take the Hambantota etc. Why they have problem with us? Because we are not going to share any territory of us. हमने कभी नहीं बोला कि आप हमारी टेरिटरी यूज कर लीजिए या कर लीजिए, we have never said that. But other countries are very much okay with it, giving their ports, etc. But India is not like that. Okay? So whenever this toppling is happening, there are many reasons behind that, not one. So first is the government maybe not favoring them, so they don't want that government to favor anymore, right? They will do some kind of disturbance. For example, recently in Nepal, they have been a Gen Z thing which has come, that Gen Z has toppled the government, and now they are trying to make, I mean, they are trying to do this elections on Instagram.
राइट, इंस्टाग्राम पे हो रहा है इलेक्शन, हाँ डिस्कॉर्ड कोई ऐप पे, राइट राइट, द ऐप पे हो रहा है, ठीक है. This is also a classic case study which you are going to study in the future. I mean, your children are going to study in the future, because this is something which is not acceptable. Like how can this happen? Like over a night, that group of people have created such ruckus. Okay, तो कुछ reasons रहे होंगे उनके पहले से, obviously frustrations रहे होंगे, but उसके बाद भी who has given them the kind of boost? वो तो कहीं से कैटलिस्ट का काम तो किसी ने किया है ना, दैट इज इम्पोर्टेंट. नाउ दिस इज समथिंग टू बी स्टडीड, ठीक है. सो नाउ कमिंग बैक टू आवर ओन दिस थिंग, actis policy we have written. Have you written this principle for peace, rules for prosperity, Indo Pacific orientation? लिखा था, लिखा था प्रिंसिपल फॉर फोर पीस है, हाँ ठीक है बस, ठीक है, लिखिए, राइट डाउन. The importance of India in Japan's Indo-Pacific region. इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ही लिखना है आपको ये. वी वर डूइंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रीवियस टाइम, जापान इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर. नहीं नहीं, पहले से करा हुआ है आपने, प्रीवियस टाइम ही कर दिया. द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया इन जापान इंडो पैसिफिक रीजन. अच्छा, फॉर यू गाइस हु हैव कम लेट, टुडे विल हैव 1.5 आवर क्लास ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन. बीच में 10 मिनट्स का ब्रेक जो होता है मिल जाएगा वो, ठीक है, वैसे ही रहेगा, बट जो एनवायरमेंट का होता है क्लास वो नहीं, इंटरनेशनल रिलेशन का ही चलेगा, ठीक है. द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया इन जापान इंडो पैसिफिक रीजन, in Indo-Pacific region has resulted in support for has resulted in support for India's effort India's effort to improve its infrastructure efforts to improve its infrastructure and connectivity with neighboring regions, and to better integrate Asian context, better integrate connectivity with neighboring regions, and to better integrate into the Asian context. Full stop. This was also the response to, likhiye, this was also the response to, everybody has gone for Dashera holiday or what? This one, last one. ये लो, पीछे भी very good. अच्छा, मे बी लास्ट नवरात्रि, मे बी बिकॉज ऑफ दैट, ठीक है, ओके, राइट डाउन. This was also the response to rise of context, Asian context. This was also in response to the rise of, दो पेन से मत लिखो, एक पेन से लिखो, ये मुझे दो, अब लिखो. This was also in context of, this was also in context of the rise of China in Asia, the rise of China in Asia, ठीक है, the rise of China in Asia. Full stop. Both countries began their economic liberalization process. मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ. Both countries began their economic liberalization process in the late 1970s.
in the 1970s. Full stop. In 2024, China is almost China is almost 4.8 times richer than India. Is almost 4.8 times richer than India. There was a prime minister with the name of Abe Shinzo, right? Shinzo Abe. So he was one of the prime minister who said that when he got elected, he said that I'm going to have a very independent approach while creating my policies for Japan that won't be influenced by anybody USA, right? So he also got assassinated, right, in 2021, I guess, right? And they had a very nice relationship with India. I mean, personally, also he had a great relationship with PM Modi, and otherwise also. So when he came, he was like, "Unka jo policy tha, which is something which is incredible." Because he always thought about that I want to strengthen the Japan without getting influenced by anyone. Okay? So write down Prime Minister Abe initiated several ABA initiated several groundbreaking several groundbreaking initiatives. Several groundbreaking initiatives. नहीं नहीं ABAE है. मैंने क्या बोला है ABE बोला है ABA बोला है. हाँ by mistake ABE अबे. Groundbreaking initiatives, comma, such as Japan's revitalization strategy. लिखेंगे यहाँ पे Japan's revitalization strategy. आपको नोट्स मिल गए थे जो मैंने अपलोड कराए हैं? क्यों नहीं मिले अभी तक? 4 days हो गए, 5 days. जापान इंडिया का आई हैव गॉट इट अपलोडेड ऑलरेडी. टेलीग्राम पे नहीं, पोर्टल पे. check it right now. Japan revitalization strategy. नहीं होगा तो just let me know today. I'll tell them again then. Telegram is not official, no. We have to officially, for us officially, we have to mail to them. ठीक है ना, तभी वो सबको विजिबल होंगे फॉर द ऑनलाइन स्टूडेंट्स आल्सो. हाँ, वो भी हो जाएगा अदरवाइज. ठीक है. नेक्स्ट इज राइट डाउन and partnership for quality infrastructure and partnership for quality infrastructure in 2016 and partnership for quality infrastructure in 2016, comma, aiming to prioritize 2016, comma, aiming to prioritize infrastructure investment in Japan's foreign policy, infrastructure investment in Japan's foreign policy, and capture the international infrastructure market, and capture the international infrastructure market to meet the बाद में देख लेना कोई बात नहीं. To meet the increasing demand for connectivity. काफी टाइम हो गया, लाइक थर्सडे फ्राइडे के हो. हाँ उसके नीचे आई थिंक थर्सडे को हो गया था. मैं विल टेल यू द डे. वेट नहीं, फ्राइडे का. वेट
25th September, 4 days ago. 26 का देखो. I'll tell them again. This is the document that has to be there, like long document. I'll tell them again. Admin नहीं कोई और करता है. I'll tell them. ठीक है? Okay. Now, India aligned with Japan on its look east. नहीं है ना? ठीक है. Write down. India aligned with Japan on look east policy. Look east policy. What are we making along with Japan? Kolkata, Ho Chi Minh City. ठीक है? What is this? See, what we want to do. यहाँ पे देखेंगे. Just focus these areas. Infrastructure कहाँ कहाँ help कर रहा है हमारा? Can you see this part? Right? So we are trying to make a kind of a connectivity. Listen, everybody, please, everybody on board. ये the kind of connectivity which connects the northeast with all these places, right? It is very important. Who is helping us? Japan is helping us in the investment process. क्योंकि उनका foreign policy ही बोल रहा है that we will invest, we want to invest. लेकिन there is a difference. When I say that when Trump told them to invest $500 billion versus now investing, दोनों में फर्क है. क्या फर्क है? Because here whatever the investment they are doing, they are going to get profits. But वहां पे जो profits है, मिलेगा नहीं मिलेगा, they do not know that. Right? यहाँ पे क्या है? That obviously they will take the fund. अभी भी you know that the interest we are paying the interest to them, Japan. That 0.1. I do not know the number. Are you sure about the numbers? 0.1% as per you. But हम लोग इतना pay कर रहे हैं उनको interest. So these interest numbers are also great for them. Imagine the amount of investment they have done in India, and you're giving 0.1% of interest to Japan. So last 50 years, okay, so this is going to happen there. But abhi kya hai, we do not have a good connectivity here. Forget about outside. We do not have a connectivity right now between India and Northeast, right? Very slim area, this area which you call it as Siliguri corridor, which you also call it chicken's neck, right, is the only way to go from this side to this side. And therefore also people have lot of this thing culturally, and not culturally but geographically they think that they are a separate part, they are secluded, because this seems like a one part and then this is a separate, right? Although it is not separate, many times all the government have tried to assure them through different policies and schemes that you are the integral part of a country, right? You should not feel like that you are secluded in any way. Okay? But they have this thing in their mind, and why? Because we have different reasons. Geographical reason is one of them. So this is also important कि आपका यहाँ पे भी connectivity बन रहा है. और उसके अलावा आपका connectivity जो बनेगा कहाँ बनेगा? East countries से. ठीक है? Imagine that you can go to Thailand in 2-3 hours, right? So this is very important. इससे क्या होगा? Trade productivity. ठीक है? Productivity हमारी बहुत बढ़ेगी. To and fro movement बहुत बढ़ेगा, right? तो हम जितना ज्यादा मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट्स के अंदर लगाएंगे, मल्टी मॉडल आई टोल्ड यू व्हाट इज डू यू मीन बाय मल्टी मॉडल, जितना हम मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट्स में लगाएंगे उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा है, हमारी प्रोडक्टिविटी के लिए, हमारी ट्रेड के लिए, हमारे रिलेशंस के लिए भी बहुत अच्छा है. लेकिन बस एक प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वी हैव टू ऑल्सो सी दैट देयर शुड नॉट बी द unnecessary illegal migrants should not come. ठीक है? When we do this, when we open the space for the people, then what happens? There could be a lot of illegal migrants that they can barge into our country. That should not happen. Okay? So write down. The first one is, or you can write like that. Write down. One of the example of this is Japan's commitment. One of the example of this is Japan's commitment to integrate India's northeast regions
with Southeast Asia, with Southeast Asia to enhance value chain, to enhance value chain and create a route, value chain and create a route to the Indo-Pacific, to the Indo-Pacific through, through first point, Indo-Pacific through first point, Kolkata Ho Chi Minh City. I'm giving you the spelling. Kolkata, simply write down hyphen Ho. This is the first example. Okay. Comma, bypassing through the chicken's neck of Northeast India. Bypassing through the chicken's neck of Northeast India. Mean city bypassing through the chicken's neck of Northeast India and running through Myanmar, comma, Thailand, Cambodia. Myanmar, Thailand, Cambodia. ठीक है, बाकी और भी हैं, फॉर एग्जाम्पल चितगोंग हो ची मिन सिटी, कोलकाता के आगे के जगह आप लिख दो चिटगांव. हाँ, चिटगांव कहाँ पर है चिटगांव? What was the historical importance of चिटगांव? हिस्ट्री में पढ़ना एक बार क्या हुआ था वहाँ पे, ठीक है, बाद में, अभी नहीं. अब आपका ये हो गया. एक आपका ओडी ए का भी आई हैव टू पुट इट, मेट्रो वाला. एक कालादान मल्टी मोडल ट्रांसफर कॉरिडोर, राइट डाउन कालादान. हाँ 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 हाँ, हिस्ट्री करेक्ट. हाँ नहीं नहीं, फिर लिखिए कालादान मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर. कालादान मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर. KALADAN मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर. ठीक है, अब हम क्या क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, राइट डाउन हेडिंग. इंडिया ट्रेड विद जापान, इंडिया ट्रेड विद जापान. या फिर आप एक लाइन बस ऐड कर देना ऊपर वाले इंफ्रास्ट्रक्चर में. द दिल्ली मेट्रो इज एन इलस्ट्रियस एग्जांपल ऑफ, आई एम जस्ट रिपीटिंग, आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेना. दिल्ली मेट्रो इज एन इलस्ट्रियस एग्जांपल ऑफ सक्सेसफुल इंडिया जापान कोऑपरेशन थ्रू यूटिलाइजेशन ऑफ जापान ODA. लिखिए, ऊपर वाले में एक बार लिख दूं, बता रही हूँ. पहले लिखिए, दिल्ली मेट्रो is an illustrious example of successful, पहले ये लिखिए, illustrious example of successful India Japan cooperation to utilization of Japan's official development assistance. India official development assistance, ब्रैकेट में लिखेंगे ODA.
नहीं, ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस, ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस, ODA। फिर लाइन एक बार बोलो। बताइए। आप बताइए क्या बोल रहे थे। हाँ हाँ, बहुत पहले स्टार्ट हुआ था, राइट, बहुत पहले का है। राइट डाउन इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जापान। इंडिया ट्रेड विद जापान लिख लो, इंडिया ट्रेड विद जापान। राइट डाउन ट्रेड पैटर्न विद जापान। Trade pattern with Japan has been increasing by 121%. By 121%. Full stop. The maximum exports were achieved in 2013. देखिए, the problem with Japan is that they have to import maximum items of their food basket. Do you understand what is food basket? Okay, so they have to see. Japan is agriculturally not that developed. I mean, fishing is one of the things that they do, right? Another thing is rice cultivation is there, but apart from that, they have to dependent upon other countries for their food imports. And food is one of the most important necessity. सबसे ज़्यादा important necessity है for any country. वो उसका basic amenity है. So that means if you are depending for the basic amenities, that means what will happen? अगर आप फूड तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनका जो GDP है, जो रेवेन्यू है, बेसिकली उनका जीडीपी है, वो इट इज गोइंग इन दैट कि अगर इंपोर्ट कर रहे हैं कोई चीज, so that means उनका जितना भी वो they are able to earn, they have to invest, they have to do the revenue expenditure. Why I didn't said the word invest? Do you think the food imports are investments? Why did I say that it's a part of the revenue expenditure? It's a part of the revenue expenditure, right? How many of you actually understand that? तभी आपको ये बात समझ में आएगी, कॉन्सेप्चुअली समझ में आएगी। हाँ, तो मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों नहीं बोला? हाँ तो हाँ, एग्जैक्टली, वेरी गुड, एसेट्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, ये दैट इज द राइट आंसर, राइट? किसी भी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो किसी चीज में, आपको पता है उस पर रिटर्न आएगा, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, दैट्स व्हाई यू काउंटेड अंडर द कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट? अगर पैसा लगा भी रहे हो, आपको पता है यू आर गोइंग टू गेट बैक द मनी एंड ज्यादा ही मिलेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बट द पॉइंट इज दिस इज द पार्ट ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, and when this becomes a part of the revenue expenditure and you know that it's not going to come back, then it becomes a problem. तो ये आपके लिए प्रॉब्लम है. Why? Either you have to create your own thing, you have to develop so much that आप अपना उगाए वहां पर, but the point with that is they cannot do it. The maximum population is living in a very concise area, because you also know that maximum part of their area is also caught by different natural calamities like earthquake, tsunami, right? Every day they experience it, so they cannot also utilize efficiently. There's a thing in a geography, like if you study the higher thing, which is also called as optimum population theory, which says that अगर आपका लोग उतने नहीं होंगे जितना रिसोर्सेज है, तो दैट मीन्स आप एफिशिएंटली अपने रिसोर्सेज यूज नहीं कर पा रहे हो. जापान के साथ प्रॉब्लम ये है कि उनका जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है इज लिविंग इन अ वेरी कंसाइज, क्योंकि सेफ भी रहना है, सबको सेफ भी रखना है, बहुत ज्यादा एरिया उनका इज अंडर द सुनामी कैलामिटी के अंदर आता है, रडार में आता है, सो दे कैन नॉट कीप दैट आल्सो, वहां पे नहीं रख सकते उन लोगों को, यूटिलाइजेशन भी उतना ज्यादा नहीं हो पा रहा है इन दैट सेंस. ठीक है, तो ideally the way the problems they are I mean they're surrounded with, उसके हिसाब से देखा जाए तो they have done excellent
अमेजिंग जॉब, राइट? बट द पॉइंट इज जो उनका ये फूड बास्केट है, इस पे अगर जितना ज्यादा डिपेंडेंट रहेंगे उतना इनको प्रॉब्लम रहेगा, ठीक है? तो इनका जो फूड बास्केट है उसको हम कौन फुलफिल करते हैं? डिफरेंट कंट्रीज लाइक इंडिया एंड अदर कंट्रीज एज वेल, ठीक है? इकोनॉमी पढ़ा है आपने, बजट पढ़ा है, बजट के कितने पार्ट होते हैं? रेवेन्यू, तो रेवेन्यू में क्या होता है? दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक होता है रेवेन्यू रिसीट्स, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिसीट्स क्या होता है? जो आपको रेवेन्यू आया, जैसे टैक्स, वो आपका हो जाएगा रिसीट्स, ठीक है? फिर आपका टैक्स में दो टाइप के टैक्स हो सकते हैं, इधर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट हो जाएगा आपका इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट हो जाएगा आपका जीएसटी, ठीक है? अब सारा समझ में। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? जैसे पेंशन पे कर रहे हो, सैलरीज पे कर रहे हो, तो उसका क्या नहीं मिल रहा आपको? रिटर्न तो मिलेगा नहीं, इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट नहीं सॉरी एक्सपेंडिचर है, आया समझ में? तो ये वही वाली बात है, ठीक है? आया समझ में? चलो राइट डाउन। इंडियाज merchandise, 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 India's Indian merchandise exports to Japan includes India's merchandise India's merchandise exports to Japan include commodities like, write down, commodities like petroleum products. It includes commodities like petroleum products. Next point, gems and jewelries. Gems and jewelries. Next, write down. Next point, iron ore. Iron ore. Next, agricultural products. Agricultural products. Next, oil seeds. Next, edible nuts. Oil seeds, edible nuts, wheat, tea, TEA, coffee, coffee, tea, coffee. Next, spices and herbs, etc. Spices and herbs. Indian seafood is most in demand. Indian seafood is most in demand in Japan. Right? अब इंडिया क्या एक्सपोर्ट, इंडियंस जापानीज एक्सपोर्ट करता है इंडिया से क्या? ऑटोमोबाइल्स, ठीक है? You know that Maruti Suzuki had a great plan. They have a good plant in India also, in Manesar, right? So Nissan, Mitsubishi, they are different companies that they are investing in India, and they have a good automobile sector. ठीक है? Write down Japanese exports to India. Japanese exports to India has increased to 26.8%. बोल रही हूँ, बता रही हूँ मैं। Japanese exports to India have increased. Japanese exports Japanese exports to India have increased to 26%, to 26%, to 26% due to huge increase in export volume of the major commodities. In the export volume of the major commodities.
The first is heavy machines. First is heavy machines. Next is electronic gadgets. Electronic gadgets. हैवी मशीन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और उनका इमेज बहुत अच्छा है जापान के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का वर्सेस चाइनीज गैजेट हाँ नहीं अदरवाइज उनका जो इमेज है वो अच्छा है राइट मतलब व्हेन यू बाय द प्रोडक्ट्स ऑफ चाइना वर्सेस बाय द प्रोडक्ट ऑफ जापान देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस जिन्होंने अपना इमेज बिल्डिंग इतना स्ट्रॉन्ग किया है विद रिस्पेक्ट टू देयर ब्रांड्स एंड आल्सो देयर प्रोडक्ट क्वालिटी दैट नोबडी कैन डाउट सेकंड डाउट ऑन दैट वेदर वी शुड टेक और नॉट ठीक है बहुत ही अच्छा उनके प्रोडक्ट्स रहते हैं वर्सेस चाइना तो यू नो ऑलरेडी क्या है ठीक है क्या क्या है इलेक्ट्रॉनिक गेमिंग सिस्टम्स एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स राइट डाउन इंडिया हैज बीन अ मेजर रेसिपिएंट इंडिया हैज बीन अ मेजर रेसिपिएंट ऑफ official development aid official development aid development aid right and while there is a potential for India's Japan export while but बोलने तो दो मैम पहले कंप्लीट करने दो सेंटेंस हाँ ये बोला ही नहीं है जब मैं सेकंड टाइम बोलूंगी ना फिर रुको while there is a potential for India and Japan's export being complementary फिर से बोल रही हूँ while there is a potential for India Japan's export being complementary, comma, there has not been enough dynamism. There has not been enough dynamism. Enough dynamism. Dynamism मतलब बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया उनके प्रोडक्ट्स में. डायनेमिज्म का मतलब ये है ऐसा नहीं कोई ऐसा प्रोडक्ट आ गया जिसकी बहुत ही ज़्यादा आपकी सेल हो रही है एंड देन द रिलेशनशिप हैज चेंज ऐसा कुछ नहीं है ऑलमोस्ट सेम है स्टैग्नेंट है हमारा जो हम फूड इंपोर्ट्स ले रहे हैं एक्सपोर्ट कर रहे हैं ठीक है लिखिए इंडिया देयर कैन बी आल्सो क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू इंडियाज ट्रेड प्रोस्पेक्ट विद जापान के आगे क्या देखते हो आप किस तरह का प्रोस्पेक्ट का मतलब क्या होता है व्हाट इज in near future what yeah how do you see the things prospects का मतलब ये होता है so write down India's trade prospects with Japan trade prospects with Japan ठीक है write down the trade prospects मुझे बोल देते okay write down the trade prospects with Japan are receding the trade prospects with Japan are receding मतलब this is one of the challenge and we have to work on this अगर हमें पता है ये हमारा वीक पॉइंट बनता जा रहा है that means अब हमें और काम करना पड़ेगा इस पे full stop the country has an extremely low inflation the country has an extremely low inflation rate the country has an extremely low inflation rate which retains the strength of its currency which retains the strength of its currency full stop ये challenge में मैं I will explain you this challenge what is this challenge ठीक है this makes it difficult for India to penetrate Japan market to penetrate Japan या फिर Japanese market full stop GDP growth of the country is only 1.41%. What is the GDP growth of India?
हाँ, इंडिया कितनी है? 7 टच करा है या नहीं किया अभी? इट इज ऑलवेज लाइक हर क्वार्टर में अगर चेक करो तो 6 पॉइंट समथिंग रहता है, 6.9, 6.8 ऐसा रहता है। चेक करना दोबारा, ठीक है। In terms of the GDP growth, what is the number that we have touched? Rank? हाँ, फोर्थ। फिफ्थ, नो फिफ्थ पहले था, अभी हम फोर्थ है, ठीक है। हाँ, वी विल। GDP, let me Kavir, I'm telling you. 8-9 बहुत है। हाँ, तब हो सकता है। हाँ, मतलब आप ये बोल रहे हो कि तब के ड्यूरेशन में, हाँ। तब तो देखो, ये यही होता है ना, जब आपके पास ग्रोथ का बहुत ज्यादा स्कोप होता है तो आप ग्रो करोगे, क्योंकि जब आप डेवलप कर रहे हो ना, तो यू विल हैव अ लॉट ऑफ ग्रोथ बिकॉज यू आर इन अ डेवलपिंग स्टेट। ऑल्दो वो डेवलप हो गए थे बहुत टाइम पहले ही, बट द पॉइंट इज यहाँ पे अब लोगों को ज्यादा वो था, उनकी पॉपुलेशन भी उस टाइम जो स्ट्रक्चर था, एज स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं, डेमोग्राफिक एज स्ट्रक्चर, वो भी उनका अच्छा था। So then the new technology coming in, people getting all the employment and all the things, technology तब budding थी, ठीक है, बना रहे थे आप लोग। एक टाइम ऐसा आता है वो स्टैग्नेंट हो जाता है, स्टैग्नेंट होते होते क्या होता है, अभी अमेरिका के साथ भी यही प्रॉब्लम है, ठीक है ना, दैट इज गेटिंग स्टैग्नेंट। व्हाट नेक्स्ट? वहां पे तो इन्फ्लेशन ही रुक नहीं रहा है, ठीक है, पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ता ही नहीं है। क्यों नहीं बढ़ता यहाँ पे इन्फ्लेशन? वाई? where Japan is having low inflation rate. In fact, जापान को डिफ्लेशन कंट्री बोला जाता है, मतलब उनके जो इकोनॉमी है वो डिफ्लेटेड रहती है, नॉट इन्फ्लेटेड मैक्सिमम टाइम। क्यों ऐसा होता है? व्हाई? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट? हाँ, इकोनॉमी से रिलेटेड है, इकोनॉमी पढ़ी आप लोगों ने, क्या रीजन है? तो क्या होगा? It depends on the people's nature, the citizens का nature. What is that? आपको पता है वहां पे बैंक में पैसा रखने से इंटरेस्ट नहीं मिलता आपको, बल्कि देना पड़ता है इंटरेस्ट। क्यों ऐसा? तभी मैक्सिमम लोग दे डू नॉट इन्वेस्ट, दे इन्वेस्ट इन आउटसाइड मार्केट। क्यों? बिकॉज बैंक में रखेंगे तो पैसा घट जाएगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा आपको, मिलेगा नहीं। हाँ, क्या रीजन दे रहे हैं? देखिए, इन्फ्लेशन कब होता है मार्केट में? व्हेन, जब आपका, देखिए, Japanese people have the habit of saving the money, and then when they will save more money, what will happen? They will won't be able to spend a lot. जब मेरा ज्यादा chunk of money will go into the savings, that means जो मेरे पास बचा है, what I'll do of that? I do not have extra money, right? इसको बोलते हैं disposable income. इसको क्या बोलते हैं हम? Disposable income. तो डिस्पोजेबल इनकम हमारे पास ज्यादा नहीं होगा, और डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा नहीं होगा तो हम क्या नहीं करेंगे? इन्वेस्टमेंट, हम खरीदेंगे नहीं चीजें ज्यादा। तो मतलब डिमांड कैसा रहेगा हमारा? ऑलमोस्ट सेम, सेम या थोड़ा कम, राइट? हल्का फुल्का थोड़ा बढ़ सकता है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, बट ज्यादा बूम नहीं आएगा। और डिमांड ज्यादा नहीं बढ़ रहा है तो प्राइसेस भी आपकी क्या है? ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट है। अब यहाँ पे प्राइसेस सबके स्टैग्नेंट हैं, ऑलरेडी कोई चीज यहाँ पे आपको फॉर एग्जाम्पल डॉलर में 2 या 200 की मिल रही है, राइट? उसके प्राइसेस ऑलरेडी सबसे लोएस्ट है। सो इंडिया का अगर कोई प्रोडक्ट यहाँ पे चला भी जाएगा, so it will give the tough competition to India's export items. So that means it becomes difficult for Indian products to penetrate in this market. चाइना के साथ ऐसा नहीं है, चाइना हैज गिवन एक्सट्रीमली रीजनेबल प्राइसेस ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। उन्होंने रीजनेबल प्राइसेस दिए, उनका इसलिए उनका इंडिया में या फिर किसी भी जगह वर्ल्ड में पेनिट्रेशन बिकेम वेरी वेरी इजी, बिकॉज प्राइसेस इतने रीजनेबल थे। अगर ये $200 का दे रहे हैं तो चाइनीज प्रोडक्ट देगा $50 का, राइट? हो गया पेनिट्रेट, दिस इज कॉल्ड द पेनिट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स। वहां में वो पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है, ऑलरेडी वहां पे भी अच्छा जो प्रोडक्ट है इट इज रीजनेबल प्राइसेस, ठीक है।
तो ये वहाँ पे प्रॉब्लम है। तो और डिमांड भी इतना, मतलब मैंने कहा ना, जैसे डिस्पोजेबल इनकम उन लोगों के पास है क्योंकि उनकी मेंटालिटी है सेव मोर। और अगर व्हाट इज दैट, यू कॉल दैट एज, इकोनॉमी में देयर इज अ वर्ड, इज अ साइकिल दैट यू फॉलो, इन्वेस्टमेंट साइकिल। क्या होता है, दैट यू इन्वेस्ट, देयर आर टू साइकिल, वर्चुअस साइकिल एंड विशियस साइकिल। नहीं पढ़ा? वर्चुअस साइकिल इज कि आप इन्वेस्ट करोगे, जॉब्स मिलेगा, सिंपल सा, टर्म्स पे मत जाओ। वर्चुअस क्या है, इन्वेस्ट करोगे, क्या बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, सबको जॉब्स मिलेगा, फिर फर्दर आपका ग्रोथ होगा, वहाँ पे और ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। कोविड के टाइम पे यही हुआ था, राइट? वी ट्राई टू पुट लॉट ऑफ मनी, जबकि उस टाइम तो गवर्नमेंट को क्या हो जाना चाहिए था, स्टैग्नेंट हो, श्रिंक हो जाना चाहिए था। उन्होंने क्या किया, दे इन्वेस्टेड लाइक एनीथिंग बिकॉज दे वांटेड टू क्रिएट मोर जॉब्स फॉर द पीपल। ठीक है, दे वांटेड टू हैव पीपल टू हैव मोर जॉब्स, नॉट ओनली जॉब्स बट इन्वेस्टमेंट भी करना चाह रहे थे वो लोग, दे वांटेड टू एक्सपैंड। ठीक है, हाँ, जीडीपी 2.0 का भी यही था। हाँ, कंजम्पशन, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट पे इतना ज्यादा आप, यू आर इन्वेस्टिंग सो मच कि पीपल विल ऑटोमेटिकली अट्रैक्टेड टू इट। क्या करोगे, लेबर्स आपको चाहिए होगा, पीपल यू विल एम्प्लॉय, राइट? दिस एवरीथिंग विल हैपन। तो गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा रोल होता है इसके अंदर। बताइए। बताया ना कि उनका तो ऑलरेडी प्राइसेस ठीक है, मतलब रीजनेबल उनके। मैंने जस्ट एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दिया है कि कोई प्रोडक्ट अगर $200 का है तो उससे ज्यादा कुछ क्या नीचे होगा वैल्यू, जस्ट सेइंग दैट। हाँ, हाँ, वो ऑब्वियसली इंडिया को अपने कॉस्ट के हिसाब से, हम अपना प्रोडक्ट उसके हिसाब से निकालेंगे कितना हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कितना हमने प्रोडक्ट किया, उसके बाद हम सेंड भी करेंगे तो टैक्स भी लेगा, इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगी ना हमारी। तो फिर वो सब कैलकुलेट करके ऐसे हम लॉस में तो बेचेंगे नहीं किसी भी कंट्री को। अगर लॉस हो रहा है तो क्यों वहाँ पे हमारा कोई भी प्रोडक्ट जाएगा? तो कॉमन सेंस है ना, फिर हम क्यों भेजेंगे वहाँ पे, भेजेंगे ही नहीं हम लोग, तो हम कहाँ भेजेंगे, फिर डाइवर्सिफाई करेंगे मार्केट। ठीक है, क्योंकि जापान इज डेवलप्ड। हाँ, जापान डेवलप नेशन है, डेफिनेटली। वो देखो, ऐसे तो लंदन में भी प्रॉब्लम है, लंदन इज ऑल्सो डेवलप लाइक सिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट यूके, आई एम टॉकिंग अबाउट यूके इज ऑल्सो डेवलप, सो व्हाई दे आर हैविंग सो मेनी प्रॉब्लम्स? सी, इफ ए कंट्री इज डेवलप्ड दैट डजंट मीन इनको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, स्टैग्नेशन एक्सेट्रा की, या भूल जाइए। ठीक है, राइट डाउन। आज समझ में आ रहा है ना सबको क्या चल रहा है, एवरीवन समझ आ रहा है ना? ठीक है, राइट डाउन। अब क्या एडवांटेज है हमारा जापान के साथ, राइट डाउन। हाँ, जीडीपी ग्रोथ 1.41%, which makes the market 1.41%, which makes the market, which makes the market stagnant. Full stop. Japan has diversified its trading partners, its trading partners, which has gone, which has gone against India, which has gone against India. Next point. The only advantage that India has, the only advantage that India has is of cheap labor. और हमारे पास भी cheap labor क्यों है? Why do we have cheap labor? Because yes, then we can do what? Exactly. नहीं, अनएम्प्लॉयड इसलिए नहीं, because बहुत सारे लोग हैं, population, right? Demands, yes, correct. Now write down the only advantage that India has, its cheap labor. Full stop. Many joint ventures have come up between, many joint ventures has come up between
India and Japan. They have come up between India and Japan. Full stop. India has advantage of technical manpower. India has advantage of technical manpower. Second point लिखिए. The next problem with India is that India has not been that India has not been able to India has not been able to change its exports basket from low value and traditional products from low value and traditional products. ठीक है? While Japan has been able to improve its basket, while Japan has been able to improve its basket to high valued products, ठीक है? Just have a reading और देखिए आपको कोई डाउट है इसमें तो. In the next class that I will take, I'll be able to complete India and Japan relation today. कल्चर वैल्यूज वाला बताया था मैंने, उस दिन भी लिखवाया था और आपके नोट्स में भी है. बिल्कुल लिखोगे, वो तो इंट्रो में आएगा ही आएगा कि बुद्धिज्म से 6th century से we have been because Buddhism transferred there, so we have the roots which are almost in the sect of the religion which it's practiced by a lot of people in India and also practiced in Japan, which makes a basis for the strong strengthening foundation for both the countries. हाँ बिल्कुल, why not, ये तो अच्छी पॉइंट है कि you are trying to tell that they are valuing something, why not, आपको करना है. ये तो इसी को तो सॉफ्ट हेजेमनी बोलते हैं. ये पार्ट है सॉफ्ट हेजेमनी का, सॉफ्ट पावर है. ठीक है. रिसीडिंग प्रिसीडिंग होता है पहला, जो पहले है. रिसीडिंग होता है घटना. इंक्रीजिंग होता है बढ़ना. ठीक है. Just check if you have any doubt in this. देखिए एक बार. We'll continue with the same topic in the next class for half an hour. अभी आप ब्रेक ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, right? So shall I keep this open? I think next class it's not going to be. No, because the timing is also there. Class online. ठीक है. If you have any doubt, just let me know अभी. जो पिछली बार पढ़ा तो now it's okay everyone. अब it's fine. ठीक है. Right? Yes, what happened? Very laughing. Huh? ये लो. Okay, everyone take your break. Okay, thank you. Okay, yeah, sure. Thank you so much.